Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. It's our class of plant metabolism, lecture number 26. Dear students, I am Dr. Ansar Hussain. Our today's lecture is about rhizobium. Outlines of today's lecture: introduction, morphology, characteristics of rhizobium, classification of rhizobium, cross inoculation groups, nodule formation, isolation, the rhizobium, mechanism of nitrogen fixation. Let's start from introduction of rhizobium. Rhizobium of soil bacteria. Rhizobium basically found in soil. Most bacteria in soil are about 1 micron in length or diameter. There are 1000 microns in the millimeter. Rhizobium has the ability to fix atmospheric nitrogen in symbiotic association with host legumes. तो राइजोबियम्स का स्टूडेंट्स जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है उसे फिक्स कर सकते हैं और ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं लेग्यूम्स के रूट्स के साथ. Bacteria in environments that have high levels of nutrients may be larger than those in nutrient-poor conditions. It converts atmospheric nitrogen into ammonium, recommended for pulses, chickpea, pea, lentil, black gram, green gram, cowpea, pigeon pea, oilseeds, soybean, groundnut. So जिन pulses की roots में ये राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ये जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया हैं, तो उनमें पल्सीज हैं, पल्सीज में चिकपी है, पी है, काउपी है, ग्रैम्स हैं और ऑयल सीड क्रॉप्स हैं जिनमें सोयाबीन और ग्राउंडनट. Morphology of rhizobium. It belongs to Rhizobiaceae family. Rhizobium are symbiotic diazotropes. It form a endosymbiotic association with legumes. Rhizobium is a gram-negative soil bacteria. They are non-sporing bacteria. Usually they are rod-shaped cells. जो स्ट्रक्चर होता है वो यूजली रॉड की तरह का होता है. Rhizobia invade legume roots through root hairs, form effective pink colored nodule in the roots. तो स्टूडेंट्स राइजोबिया जो है ये रूट हेयर्स के थ्रू जो है लेग्यूम क्रॉप्स को इन्वेड करते हैं और पिंक कलर के जो है ये नड्यूल बनाते हैं रूट्स में और उनमें ये जो रहते हैं और ये सिम्बायोटिक रिलेशन बनाते हैं क्रॉप्स के साथ, प्लांट्स के साथ. सिम्बायोटिक रिलेशन कौन सा होता है जिसमें होस्ट भी बेनिफिट लेता है और जो उसके साथ दूसरा ऑर्गेनिज्म जैसा कि हमारे इस केस में राइजोबियम बैक्टीरिया है तो ये भी बेनिफिट लेते हैं. तो ये बेनिफिट्स क्या ले रहे होंगे, ये प्लांट से अपनी फूड वगैरह ले रहे होंगे और प्लांट्स को क्या बेनिफिट हो रहा होगा कि राइजोबियम बैक्टीरिया जो है ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स कर रहा होगा जो कि प्लांट्स को अवेलेबल होगी. तो इन रिटर्न जो है बैक्टीरिया को लिविंग के लिए एक स्पेस भी मिल गई प्लांट में और उसे फूड भी वहां से मिल गई. Rhizobia lives symbiotically inside the nodules and fixes nitrogen, converts atmospheric nitrogen to plant accessible forms. Students, we will discuss about classification of Rhizobium. Rhizobiaceae family have 5 important genera. Rhizobium, slow-growing rhizobia produce acid. Number 2,
variety Rhizobium. These are fast-growing rhizobia produce alkali. Number 3, Rhizobium, inducing both stem and root nodules. Number 4, Rhizobium. Number 5, Rhizobium. Cross inoculation groups: Rhizobium Leguminous, Pisum, Rhizobium Frisoli, found in beans, Rhizobium trifoli, found in clover, Rhizobium millimetre, found in alfalfa, also called medicago, Rhizobium japonicum, found in soybean, Rhizobium lupine, found in lupine groups. Nodule formation. Nodule formation is an important step involved in Rhizobium nodulation process. So students, following steps are involved for nodule formation process. Number 1, attraction and multiplication of Rhizobium. तो पहला स्टेप जो है वो प्लांट्स जो है वो अट्रैक्ट करते हैं राइजोबियम को और उनकी फिर मल्टीप्लिकेशन, अटैचमेंट टू द रूट सरफेस. सो जो सेकंड स्टेप है उसमें फिर ये राइजोबिया जो है वो रूट सरफेस के साथ अटैच होते हैं. थर्ड स्टेप इज रूट हेयर कर्लिंग. जब ये रूट हेयर के साथ अटैच होते हैं तो फिर उस रूट हेयर्स को कर्ल करना शुरू कर देते हैं. फॉर्मेशन ऑफ इन्फेक्शन थ्रेड. And number 5 is nodule formation. So finally nodule is formed. First step, attraction and multiplication of rhizobium. In this step, interaction between rhizobium and legume is by flavonoid produced and secreted by legumes. तो राइजोबियम को अट्रैक्ट करने के लिए जो लेग्यूम्स हैं वो फ्लेवोनाइड्स प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें फिर सेक्रीट करते हैं और उनकी वजह से फिर इन फ्लेवोनाइड्स की वजह से राइजोबिया जो है वो अट्रैक्ट होते हैं और राइजोस्फीयर में आ जाते हैं. स्टेप 2 ऑफ नोड्यूल फॉर्मेशन, अटैचमेंट टू द रूट सरफेस. सो स्टूडेंट्स, इस पिक्चर में भी हम देख सकते हैं कि अब जो ये रॉड शेप राइजोबियम बैक्टीरिया है वो अब रूट सरफेस के साथ अटैच होते हैं. एक्सोपोलीसैकेराइड प्रोड्यूस्ड बाय द राइजोबियम interacts with the lectin produced from the plants. So राइजोबियम जो है वो एक्सोपोलीसैकेराइड जो है प्रोड्यूस करते हैं, वो इंटरेक्ट करती है लेक्टिन के साथ जो कि प्लांट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. एक्सोपोलीसैकेराइड्स हेल्प्स टू बाइंड राइजोबियम सेल्स टू द रूट हेयर. और ये जो एक्सोपोलीसैकेराइड्स हैं जो राइजोबियम प्रोड्यूस कराते हैं ये फिर मदद देते हैं राइजोबियम को रूट सरफेस के साथ अटैच करने. स्टेप 3 ऑफ नोड्यूल फॉर्मेशन. स्टेप 3 इज रूट हेयर कर्लिंग. तो स्टूडेंट्स, हम पिक्चर में देख सकते हैं कि अब आहिस्ता आहिस्ता ये जो है इन्होंने राइजोबियम बैक्टीरिया जो है इन्होंने रूट हेयर को कर्ल करना शुरू कर दिया, फोल्ड करना शुरू कर दिया. राइजोबियम प्रोड्यूस IAA. The curling of root hair is attributed to IAA. Therefore, rhizobia become enclosed by the root hair wall. Root hair curling forms a structure called sphered fruit. So ये जो फाइनली रूट हेयर कर्लिंग से जो स्ट्रक्चर बनता है उसे स्फेयर्ड फ्रूट कहते हैं. स्टेप 4, फॉर्मेशन ऑफ इन्फेक्शन थ्रेड. Infection thread originates from the tip of the curled portion of root hair. So infection thread है ये root hair के tips पे बन रही होती है. It's a tubular structure that carries rhizobia from the root surface to cortex. तो इस infection thread के जरिए ये जो tubular structure बनता है rhizobia जो है वो root surface से root cortex तक move कर जाता है. The nucleus of the root hair cell guides the pathway of infection thread into the root hair. तो स्टूडेंट्स, ये कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स होते हैं जो इन्फेक्शन थ्रेड फॉर्मेशन के वक्त होते हैं और हम ये देख सकते हैं कि रूट हेयर पे
इन्फेक्शन थ्रेड बने हुए हैं और इन इनफैक्ट ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। इन इन्फेक्शन थ्रेड के जरिए जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो रूट सरफेस से रूट कॉर्टेक्स तक पहुंच जाता है और वहां ये नोड्यूल फॉर्मेशन करता है। स्टेप 5 ऑफ नोड्यूल फॉर्मेशन इज nodule formation. Infection thread continues to grow beyond the root hair cell and penetrate cortex cell. तो इन्फेक्शन थ्रेड जब वो उसकी ग्रोथ जारी रहती है और वो पेनिट्रेट कर देता है cortex cell तक. On entry into the cortical cells, infection thread branches rhizobia are released shortly into the cortical cell. और फाइनली क्या होता है, rhizobia जो है वो cortical cells में रिलीज हो जाती है. Concurrent with the invasion of rhizobia, there occurs as rapid burst of cell division of the host cells and rhizobia changes their shape to form cells called bacteroids. और फाइनली जो है वो bacteroid cells बन जाते हैं. Therefore, diploid cells become bacteroids. तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं, पिक्चर दी गई है रूट नोड्यूल फॉर्मेशन के बाद की, और इसमें हम देख सकते हैं कि बैक्टीरिया ने फाइनली जो है वो नोड्यूल फॉर्मेशन कंप्लीट कर ली है. In this slide, this whole process of root nodule formation is explained in the pictures form. First step is root nodes within a root systems. So we can see root nodes. Second is root hair and movement of bacteria towards root hair. Third step is free living rhizobia covering the root hair. तो थर्ड स्टेप जो हम देख सकते हैं राइट साइड पे कि राइजोबिया जो फ्री लिविंग है उन्होंने रूट हेयर को कवर करना शुरू किया. स्टेप 4 रूट हेयर बिगन टू कर्ल. तो चौथा स्टेप पे रूट हेयर उसमें कर्ल होना शुरू हो जाएगा. 5 फॉर्मेशन ऑफ एन इन्फेक्शन थ्रेड थ्रू विच राइजोबिया एंटर द रूट सेल. तो हम ये तस्वीर में देख सकते हैं, हमारी जो पिक्चर है इसमें देख सकते हैं कि 5 नंबर पे जाके जो इन्फेक्शन थ्रेड फॉर्मेशन होनी शुरू होगी और उस इन्फेक्शन थ्रेड के जरिए हमें पता है कि ये बैक्टीरिया जो है एंटर हो जाएगा. नंबर 6 इन्फेक्शन थ्रेड स्प्रेड्स इनटू द एडजेसेंट सेल. सो फिर इन्फेक्शन थ्रेड जो है वो करीबी सेल्स तक फैल जाता है. नंबर 7 बैक्टीरियाइड्स आर रिलीज फ्रॉम द इन्फेक्शन थ्रेड. सो 7 जो स्टेप है उसमें बैक्टीरियाइड जो है वो रिलीज हो जाते हैं इन्फेक्शन थ्रेड से. 8 सो बैक्टीरियाइड्स form root nodule. So formation of root nodule is completed. Isolation of the rhizobium from leguminous plants. So here we will discuss how can we isolate the rhizobium from leguminous plants. Requirements: legume plants, root, sterile distilled water, pipettes, test tube, YEMA plate, 70% ethanol, 0.1% mercurous chloride solution. So हमें कुछ जो एसेसरीज चाहिए होती हैं, जो हमें मटेरियल चाहिए होता है, दरअसल मटेरियल है. नेक्स्ट प्रोसीजर selection of root nodules. Leguminous plants are carefully uprooted. The root system is washed under running water to remove the adhesive soil particles. The color of the nodule varies from brown to pink. Surface sterilization of leguminous root nodules. The nodules must be surface sterilized by the sterilizing agent, and sterilizing agent must be washed off on the nodules before they are used for isolation. The sterilizing agent used 0.1% mercuric chloride or 3 to 5% hydrogen peroxide. The nodules are immersed in sterilizing agents for 4 to 5 minutes and are washed repeatedly with sterilized distilled water. Then they are washed in 70% ethyl alcohol, followed by washing with sterilized distilled water. Isolation of bacterial biofertilizers. Students, in this slide, we will discuss how can we isolate the rhizobium from root nodule.
So we'll take root nodules, then we'll do sterilization, wash water for 3 minutes in petri dish, then move to the next step, treat with 0.5% sodium hypochlorite for 30 seconds, then treat the nodules with 70% ethanol for 1 minute. Next step is dried with sterilized filter paper, then sterile HO2 contain these cells. After that, we'll grow that isolated rhizobia in petri dish, inoculation for overnight, and then we can see we will have the rhizobium for further use. Another method of isolating rhizobium is cereal dilution method. We can use cereal dilution method to isolate rhizobium. So in this method, we will take the first step is nodules are washed in a 70% alcohol and sterilized distilled water with the help of a glass dot. YEMA plates are prepared and sterilized by autoclave. Then nodular extract is prepared by taking 1 gram of nodular extract in 10 ml of sterile distilled water and mixed well to get suspension. After that, 1 ml of nodular extract suspension is diluted with 9 ml of sterile distilled water, making the dilution to 10 raised power 2. Similarly, making the dilution up to 10 raised power minus 8 made separately for each nodular extract. Suspension 0.1 ml of nodular extract suspension from 10 to the power of 3 to 8 dilutions are inoculated into sterile YEMA plates. The sample is spread throughout the YEMA plates. Dear students, here in this slide we can see the isolation of Rhizobium bacteria by cereal dilution method. So we have suspension of microbial cells in a flask, then we'll add 1 ml in 9 ml saline, this become tenfold, then we will take 1 ml from this tube into next tube, so it will become 100 folds. Then we will take 1 ml from this 100-fold tube into another tube, so it will become 1000-fold, and then we will take 1 ml into another tube, so it will become 10,000-fold, and then 100,000-fold and million-fold. So this is a cereal dilution method. After that, we melted agar, and then we will pour this solution into plates having the required material, nutrients, and then we will incubate this petri dish at recommended temperature, and after that colonies of Rhizobium bacteria will grow in this petri dish, and we can pick up and isolate these colonies. So this method is called cereal dilution method for isolation of Rhizobium bacteria. Mechanism of nitrogen fixation. The conversion of free nitrogen into nitrogenous salts to make it available for absorption of plants is called nitrogen fixation. Basic requirements of nitrogen fixation. Students, there are some basic requirements for nitrogen fixation, including nitrogenase and hydrogenase enzymes, protective mechanism against oxygen paradoxin, hydrogen releasing system or electron donor, pyruvic acid or glucose sucrose, constant supply of ATP, coenzyme and cofactors, CoA, inorganic phosphate and magnesium, cobalt and molybdenum. So these are some basic requirements for nitrogen fixation. Nitrogenase enzymes active in anaerobic condition, made up of two protein subunits, non-iron protein, Fe protein are dinitrogen reductase. Iron molybdenum protein, MOFP protein are dinitrogenase. Iron protein reacts with ATP and reduces. Second subunit which ultimately reduces
nitrogen into ammonia. So here is the equation: nitrogen plus 6 hydrogen, it makes 2NH3 ammonia. The reduction of N2 into NH3 requires 6 protons and 6 electrons. 12 moles of ATP required. One pair of electron requires 4 ATP. The modified equation: hydrogen produced is catalyzed in proton and electron by hydrogenase. So we can see this reversible reaction. Hydrogen in the presence of hydrogenase converts into 2H plus 2E. Pathway of nitrogen fixation in root nodules. Glucose 6-phosphate acts as electron donor. Glucose 6-phosphate is converted to phosphogluconic acid. Here is the equation: glucose 6-phosphate plus NADPH plus H2O makes 6-phosphogluconic acid plus NADPH plus H. NADPH donates electron to pyridoxine, proton release and pyridoxine is reduced. Reduced pyridoxine acts as electron carrier. Donate electron to iron protein to produce it. Electron released from pyridoxine thus oxidized. Then reduced iron protein combined with ATP in the presence of magnesium. It donates electron to N2 to NH3. Enzyme set free after complete reduction of nitrogen to ammonia. This was all the pathway. Nitrogenase actually consists of two proteins that work in tandem: the iron protein and molybdenum-iron protein. During the catalytic reduction of dinitrogen, the electrons are transferred from iron protein to molybdenum-iron protein. Nitrogenase is extremely sensitive to oxygen. Root nodules of nitrogen fixing plants contain the oxygen binding protein, like hemoglobin, which protects nitrogenase by binding molecular oxygen. Thank you so much, students, for your attention.